Hello student, welcome to ICF. This is our second lecture for 10th Cbse light reflection and refraction. तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय द लाइट, व्हाट इज एक्चुअली लाइट इज। देन सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। थर्ड टॉपिक हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, देन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। These all are the topics which we have covered in the first lecture. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो इससे पहले मैंने वहां पे एक लिंक दी है, वो लिंक पे जाइए, आपको ये सब टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मिरर्स। व्हाट इज मीन बाय द मिरर्स? नाउ द फ्रेंड्स, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ व्हेन light falls on any surface, I'm not talking about the mirror, this is any transparent surface. अगर इस पे लाइट फॉल होती है, so three things happen, that is R, A, T. What is meant by the R? When this light falls, some of the light is reflected back, some of the light is absorbed by the surface, and some of the light is transmitted by the surface. That means अगर ये लाइट इस पे फॉल हो रही है, so first reflection occur, some of the light is reflected back, some of the light is absorbed by the surface, and some of the light is transmitted into the medium. Now what happens in case of mirror? Now mirror has one reflecting surface and one non-reflecting surface. Therefore एक सरफेस उसका ऐसा रहता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरा सरफेस रहता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती. So this is the mirror. This is non-reflecting surface. We consider this as non-reflecting surface and this is reflecting surface. Now when light falls on it, maximum amount of light is reflected back. This is called as the incident ray. We have seen in last lecture. और इसको हम कहते हैं reflected ray. So mirror is a plane surface which absorb less amount of light and reflect maximum amount of light. This is the definition of the mirror. So what is mirror? Mirror is a surface which absorb less amount of light and it will reflect maximum amount of light. Now next, there are two types of mirrors. Types of mirrors. First is plane mirror and second is spherical mirror. प्लेन मिरर जो हम हमारे घर में यूज करते हैं, कबर्ड में जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर. स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर and second one is convex mirror. Now we are going to see the properties of images formed by this mirror. Now before going to next detail into this, we are going to show what is mean by the image. Actually में image क्या होता है? When you stand in front of the mirror, अगर आप एक आईने के सामने खड़े होते हो, उसमें जो आप देखते हो वो आपकी image होती है. So this is called as a image. Now pause this video and write down this. So next topic is nature of the image. एग्जाम में ये हमको क्वेश्चन आता है कि वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, उसमें बताते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज. सो इन दैट वी हैव टू डिफाइन दिस थ्री टर्म. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन और एटीट्यूड ऑफ द इमेज. नाउ व्हाट इज मीन बाय द पोजीशन ऑफ द इमेज? Whether the image is formed behind the mirror or in front of the mirror. From that we define the position of the image.
एंड दैट इज रियल और वर्चुअल। ये अगर मिरर है, हमारा आईना है, अगर हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो हमारी इमेज आईने के पीछे खड़े होते हैं, ठीक है। जितना हम आईने से पीछे जाएंगे वो इमेज वही पीछे जा सकती है, जितना हम आईने के तरफ जाएंगे वो इमेज भी आईने की तरफ आती है। दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल। अगर वही इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इन केस ऑफ लेंस, लेंस मीन्स ग्लास। ये अगर कांच है, कोई भी कांच लेते हैं हम, उससे देखते हैं तो हमें बिहाइंड, उसके पीछे इमेज दिखती है, तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और अगर मैं कोई आईने से कांच की टुकड़े से देख रहा हूँ, रियल लेंस से देख रहा हूँ, उसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और ये पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमको रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रे डायग्राम की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल मीट होती है, तब हमारी रियल इमेज फॉर्म होती है। रिफ्लेक्टेड रे हियर एक्चुअली मीट, यहाँ पे मीट करती है, एक दूसरे से मिलती है। इन वर्चुअल में वो मीट नहीं होती, जैसे डाइवर्जेंट, अगर रेस ऐसे जा रहे हैं तो वो मीट नहीं होती, तो क्या करते हैं हम उसका ट्रेस लेते हैं, तो उसके फॉर्म बाद में जो इमेज तैयार होती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज। नाउ इमेज कैन बी मैग्निफाइड, कैन बी ऑफ द सेम टाइम और डिमिनिश। व्हाट इज मीन बाय द मैग्निफाइड इमेज? अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है और उससे फॉर्म होने वाली इमेज अगर बड़ी है तो उसको हम कहते हैं मैग्निफाइड इमेज। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है तो मैग्निफाइड। अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज की साइज सेम है सो दैट इज क्लासिफाइड एज ए सेम साइज ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज उससे छोटी है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय द ओरिएंटेशन? फर्स्ट इज इरेक्ट और अपराइट। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, ठीक है, और ये उसकी इमेज है, ये हेड है ये टेल है। अगर दोनों का हेड अप है और टेल और अप उसके नीचे, तो उसको हम कहते हैं अपराइट और इरेक्ट। ये देखिए इसका हेड ऊपर है, हेड ऊपर है, सो इसको कहते हैं हम इरेक्ट इमेज। व्हाट इज मीन बाय द इन्वर्टेड? ये ऑब्जेक्ट इसका हेड ऊपर है, ये इमेज इसका हेड नीचे है, तो उसको हम कहते हैं inverted image, that is vertically inverted. Now next is laterally inverted images. What is meant by the laterally inverted images? अगर हम आईने के सामने खड़े रहते हो, अगर मैं उसमें मेरा राइट हैंड ऊपर कर दूं तो आईने में हमको दिखता है कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आता है, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आईने में जो तैयार हो रही है वो मेरी इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट का राइट हैंड ऊपर है और इमेज के लेफ्ट हैंड ऊपर है तो उसको हम कहते हैं laterally inverted images. ये प्रिंसिपल आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में भी उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जब सामने कोई गाड़ी वाले या कार जा रही हो, उसके साइड में जो साइड व्यू मिरर होते हैं और उसको हम रेयर व्यू मिरर भी कहते हैं, उसमें अगर वो पीछे एम्बुलेंस आ रही है देखता है उसको, तो उसको वो वर्ड करेक्ट तरीके से दिखता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैटरली इन्वर्टेड। अनदर एग्जाम्पल, अगर हम हमारा कैमरा यूज करें फोन का, अगर पीछे वाला कैमरा यूज करता है तो सब सीधा दिखा देता है, मतलब राइट हैंड ही दिखता है। लेकिन हम अगर सेल्फी कैमरा यूज करें तो उसमें हमारा राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। We have seen that there are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror. उसमें से हम देखने वाले अभी what is the properties of the image formed by the plane mirror. First is virtual. अभी हमने देखा कि virtual image क्या होती है। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई तो खड़ा है, उसको हम कहते हैं virtual image. That is image is behind the mirror. नेक्स्ट इरेक्ट। व्हाट इज मीन बाय द इरेक्ट? अगर मेरा सर ऊपर है पाँव नीचे है तो इमेज में भी हमको वैसा ही दिखता है, सर ऊपर ही रहता है और पाँव नीचे ही रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ए इरेक्ट इमेज। सेम साइज,
when we see in the mirror, our same size is seen in the mirror. जितना ही हमारी हाइट है उतने ही हाइट का ऑब्जेक्ट हमें इमेज हमें मिरर में दिखती है, ना उससे बड़ी ना उससे कम, सेम साइज. नेक्स्ट इज लैटरली इन्वर्टेड. अभी डिस्कस किया हमने, अगर मैं मेरा राइट हैंड ऊपर करूँ तो इमेज में हमें मिरर में जो इमेज तैयार होती है उसमें हमें लेफ्ट हैंड ऊपर किया ऐसा अपीयर होता है. देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. इसका मतलब जितना मैं मिरर के आगे खड़ा हूँ हमारी इमेज उतनी ही मिरर के पीछे खड़ी होती है. अगर मैं मिरर की तरफ जाता हूँ तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ भी आती है. ऐसा नहीं कि अगर मैं आगे जा रहा हूँ वो पीछे जा रही है, ऐसा नहीं होता. अगर मैं मिरर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी इमेज भी मिरर की तरफ आती है. अगर मैं मिरर से दूर जा रहा हूँ तो मेरी इमेज भी मिरर से दूर जाती है. So this is the properties of the image formed by the plane mirror. This is 2 marks question. So note it down. Now next topic is spherical mirror. Now if we consider one sphere, अगर उसको हम एक प्लेन से ऐसा काट लें तो उससे हमें ये ऐसा कुछ सरफेस मिलेगा. Now उसको अगर हमने इनसाइड जो सरफेस है उसको हमने रिफ्लेक्टिंग किया और जो आउटवर्ड है उसको हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग किया तो उसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर. A mirror whose inner curved surface is reflecting surface and which faces towards the center. इसका जो फेस है towards the center है और जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, उसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इनर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉन्वेक्स मिरर. रे डायग्राम निकालते समय इसको हम ए से निकालते हैं. दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड एज ए कॉन्केव मिरर. इन कॉन्वेक्स मिरर वी ड्रॉ लाइक दिस. These lines show the non-reflecting part and this plane part shows the reflecting part. So note down this. Now next is nomenclature of spherical mirror. Friends, this is very important because ये nomenclature exam में आते हैं इसके definition के लिए. So first is pole of the mirror. It is denoted by letter P. Now this is one sphere. From this we have cut this mirror. Now this is our mirror. ये जो इतना रेड में दिख रहा है वो हमारी मिरर है. So the center of the reflecting surface of the mirror is called as a pole of the mirror. ये जो मिरर है उसका जो सेंटर रहता है उसको हम कहते हैं pole of the mirror. सेकंड डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको हम डिनोट करते हैं लेटर 6. नाउ ये जो अपनी मिरर है वो हमने एक स्फीयर से कट किया हुआ है. स्फीयर को हमने कट करके हमारी मिरर बनाई हुई है. उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर. द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose the mirror is part. This mirror is the part of this sphere. So the center of the curvature is the center of the sphere whose the mirror is part. That is called as a center of curvature. Third definition है radius of curvature. It is denoted by letter R. The radius of the sphere radius of the sphere whose mirror is part. ये जो मिरर जिस स्फीयर से हमने बनाई हुई है उस स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. Now the imaginary line which passes through the center of curvature and pole of the mirror is called as a principal axis. ये जो imaginary line है which joins the center of curvature and the pole of the mirror is called as a principal
axis. Fifth definition is focus. Now, focus is very important. This is actually here हमको रे डायग्राम कंसिडर करनी. अगर यहाँ से मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ता हूँ parallel to the principal axis. This is incident ray. Now, this is concave mirror. Concave mirror is also called as a converging mirror because उसके ऊपर जो रे जाते हैं वो उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे. अभी ये इंसिडेंट रे which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through one point in front of the mirror. ये जो इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से कन्वर्ज होती है बिकॉज दिस इज कॉन्केव और कन्वर्जेंट मिरर और कन्वर्जिंग मिरर. सेम अगर यहां से मैं करे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास दिस फोकस. These two are the reflected rays. ये और ये रे है वो reflected ray. Both these rays will meet at one point in front of the mirror. That is called as a principal focus of concave mirror. अभी हमने definition देखी है principal focus of concave mirror. When incident ray parallel to the principal axis after reflection pass through one point in front of the mirror. That is called as a principal focus of concave mirror. Same thing we have to draw for convex. अभी हम देखेंगे convex के लिए क्या था. This is our convex mirror. और this is also called as a diverging mirror. क्यों कहते हैं वो अभी देखते हैं. The line which passes from the pole and अभी इसका here का center somewhere here आएगा because ये ऐसा sphere है तो इसका center यहाँ पे आएगा. अगर एक line रे आती है which is parallel to the principal axis, this is our principal axis. Now, this is mirror. मिरर में रिफ्लेक्शन होता है. दिस लाइट रे विल गो इन दिस डायरेक्शन. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. सेम थिंग हैपन हियर. दिस इज इंसिडेंट रे, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट डाइवर्ज. दिस इज द डाइवर्ज. दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. अगर ये दोनों रेज का मैं ट्रेस ले लो, ये दोनों कहीं भी मीट नहीं हो रही. इमेज वहां पे फॉर्म होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है. अब ये दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे अवे फॉर्म जा रही है, दैट मींस इमेज तो फॉर्म होने वाली नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रेस लेते हैं. वी विल टेक ट्रेस ऑफ दिस पाथ. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज बिहाइंड द मिरर. So how to define the principal focus of convex mirror? If the incident ray which are parallel to the principal axis, they are incident on the convex mirror, they will get diverged from that point. And if we take their trace, it will appear that the image, these rays are coming from this point, and this point is called as a principal focus of convex mirror. अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमको दिखता है कि ये रे ये पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है. इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर. द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज behind of the mirror. These are two separate definitions that can be asked for 2 marks. Now, next is focal length. Now, what is the focal length?
The distance between pole of the mirror to the focus is called as a focal length. The distance between pole of the mirror and principal focus is called as a focal length, and it is always half of the radius of curvature. So this is also very important definition. What is the focal length of the mirror? It is the distance between the principal focus and the pole of the mirror, and it is always half of the radius of curvature. ये जो distance है उसका half ये आएगा. So these are the very important definition. Pause the video and write down all the definitions which I have taught you right now. Now next is your activity number 10.2. How to find the principal focus of concave mirror. Now here you have given some apparatus such as one concave mirror is given to you, one plain piece of paper is given to you, and you have to find the principal focus. Now the simple activity you have to do during the daytime. Here what you have to do, you have to put one paper over here. This is paper. This is our sun. And you have to hold your concave mirror, which is the converging one, in such a way that all the light coming from the sun. Now, light coming from the sun are considered as a parallel rays. These are all parallel rays, and we know that concave mirror is converging mirror. So after reflection, these all rays will meet at one point. हमने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में भी किया होगा, जब हम कोई मिरर लेते हैं और उसको हम एडजस्ट करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट आता है. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ए फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर. This distance between the mirror and this point is known as a focal length. So this is the method, or this is the activity to determine the principal focus or focal length of the concave mirror.